Now we move on to the basic terminology of object-oriented programming. First of all, the most important concept of object-oriented programming, which is class. Structures ये आप पहले पढ़ चुके हैं, आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में भी शायद इनके ऊपर थोड़ा सा काम किया होगा. Structures are basically very similar to class, but there are some very important differences. So the fundamental difference is variables and functions in class can have different properties. So in case of structures, you basically define different attributes of an abstract data type, and you don't really want to write the functionality that you need there. But in case of class, we can have variables. We can bundle the variables to make an abstract data type. और उसके अलावा हम उस क्लास में वेरिएबल्स के साथ ही साथ जो हमें फंक्शनैलिटी चाहिए होगी उन वेरिएबल्स को मॉडिफाई करने के लिए वो भी हम साथ ही स्पेसिफाई कर सकते हैं. Second term in object-oriented programming after class is object. Object is an example of a class, instance of a class, just like an instance of a primitive data type. In primitive data type, you study it like for integers and floats and double. These are all primitive data types. But class is basically a form of user-defined data type. So जिस तरह से आप primitive data type के instances create कर सकते हैं, like integer define कर सकते हैं आप और उसका एक नाम रख सकते हैं. C++ में जैसे कोड लिख के कर सकते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट्स को भी इंस्टेंशिएट किया जा सकता है. ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट करने का मतलब ये है कि हम क्लास को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल्स हम अभी आगे देखते हैं कोड में. सो बेसिकली क्लास इज लाइक ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर like houses built from that blueprint. What do we mean by a blueprint here? You can think of a map of the architecture of a house, और उसको हम अभी blueprint कह रहे हैं. So you can think of it as a piece of paper where you have basically drawn the architecture of the map of the house. और उसमें ये स्पेसिफाई कर दिया कि इस रूम में कितनी एंट्रेंसेस हैं और उसमें कितने रूम्स हैं और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं. ये आपने अगर पेपर पे लिख दिया तो these are basically a set of instructions that you can use to create houses, multiple different houses. इसी तरह से हम समझ सकते हैं जो रिलेशनशिप है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान. Classes are basically blueprints or a set of instruction that we can use to create objects. आपके सामने ये एक पिक्चर है इस स्लाइड पे. इसमें जो पिक्चर में ऊपर आप देख सकते हो जी, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट दिखाया गया है और इसमें जिसको भी हाउस प्लान भी कह सकते हैं आप, इसको मैंने रेड में टिक किया है. ये एक मैप है आपके लिए और इसको यूज़ करते हुए हम जो नीचे आपको दिखाई गई हैं डिफरेंट हाउसेस 1 2 3, ये जो डिफरेंट टाइप के हाउसेस हैं ये इस हाउस प्लान को देखते हुए बनाए गए. I hope you have a very good understanding of objects, but this is another perspective to understand the relationship between classes and objects. So as compared to the house plan, the houses at the bottom of this figure are actually different houses where you can have a different name for this house. You can also have a different address for this house. You can allocate this house to
different houses to different people, which is not possible in case of class, because class is just a plan, a set of instructions to create houses. So यहाँ से आपको जो पता चलता है वो ये है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट डेटा, स्टोर डेटा, बट क्लासेस को हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे. एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स. इस एट्रीब्यूट्स तो बेसिकली उसकी स्टेट को हम कहते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट हो सकती है. And these are basically members of a class. Different types of primitive data types, variables can be used here, or you can also have user-defined types as attributes. Method and behavior. So state के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो behavior, उस class का, या जिसको हम functionality भी कहते रहे हैं, इसको methods भी कहते हैं. अभी कुछ और डिटेल्स हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड. सो बेसिकली वी वांट टू हाइड द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो ये पहला पॉइंट है, बेसिकली वी वांट टू हाइड द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज पॉसिबल थ्रू डेटा हाइडिंग. This can be achieved by restricting access to certain members of an object's members, means state of the object. What is public interface? Another term in object-oriented programming. So a class can have two interfaces. One is public, other one is private. Public interface contains members of an object that are available to the outside of the object. इससे होगा क्या आपको फायदा? It will help the object to provide access to some data and functions without sharing its internal details and design. As you know that we are using C++ as a tool and technology for understanding object-oriented programming. So in C++, but in also in Java and C#, this is the same syntax for creating classes. You start with the keyword class, then you provide the name of the class. जो आप use करते हैं variable names के लिए, जो आपके पास standards हैं, जो regulations हैं, जो restrictions हैं, वो सारी applicable हैं class name पे भी. And within the curly brackets terminated by semicolon, you can provide the declarations. So this is the starting bracket, this is the ending bracket, this is the semicolon, and here you can provide declarations. Declaration can be for the state or members of the class, and declarations could also be for functions or behavior of the class, जो कि दो चीजें एक क्लास में हो सकती हैं. तो डिक्लेरेशंस दोनों के लिए हो सकती हैं. दिस इज एन एग्जांपल. से इस केस में आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल की क्लास क्रिएट की गई है. देन यू कैन सी द प्राइवेट कीवर्ड फॉलोड बाय टू डबल टाइप वेरिएबल्स, विड्थ एंड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल. नाउ यू कैन इफ यू थिंक ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आपके जहन में रेक्टेंगल से रिलेटेड दो चीज़ें आएंगी. अगर आप रेक्टेंगल को डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो वो उसकी विड्थ होगी और लेंथ होगी. और रेक्टेंगल का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर आप क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहेंगे. अल्टीमेटली वी वांट टू यूज दिस क्लास रेक्टेंगल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास. तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे इस क्लास के, उसके एट्रीब्यूट, उन सारे ऑब्जेक्ट्स के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे विड्थ और लेंथ के. लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स को आप बाद में उनकी स्टेट को चेंज भी करना चाहेंगे. फॉर एग्जांपल, you want to create a rectangle which is width 10, length 5, but later on you want to change the width of the rectangle and leave the length of the rectangle as before. So अगर आप उसकी सिर्फ width change करना चाहेंगे तो एक ऐसी functionality आपको इस object पे चाहिए जो कि इसकी length, इसकी width change कर सके. Similarly, you may want to change the length. उस केस में आपको एक ऐसा फंक्शन, ऐसा बिहेवियर चाहिए जो कि उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज कर सके. सो वो सारे बिहेवियर्स जो कि आपको वो सब बिहेवियर जो आपको चाहिए हो सकता है इस क्लास के ऑब्जेक्ट की स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए, हासिल करने के लिए.
तो उसको आप इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिक इंटरफेस ऑफ द क्लास आप फंक्शंस की फॉर्म में लिख देंगे and these are regular C++ functions. As you can see, function return type followed by the name of the function, and in round brackets you can see the type of the argument that this function will receive when you call this function. So basically in this example rectangle, there are two attributes for or members for storing the state of the rectangle objects, and there are five different functions or behavior of for manipulating or changing or retrieving the state of these objects. So private keyword is used for data hiding. If you want to hide the details of internal details of a class from outside the class, तो उस केस में आप जो भी हाइड करना चाहते हैं आप वो डेटा या एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं या वो इन फंक्शंस में से कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं। उन दोनों को अगर आप हाइड करना चाहते हैं इस क्लास के आउटसाइड से, तो उस केस में आप उसको प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सिर्फ स्टेट को या उसके डेटा मेंबर्स को हाइड किया गया और पब्लिक इंटरफेस में जो चीज़ें लिखी गई हैं ये हिडन नहीं है। वी कैन call this functionality from using the object. So this is the difference between public and private. Private members and then public members. Public members can be used to modify the state. So these are a few important points related to access specifiers. Access specifiers can be used in any order. You can write private before and then you can write public interface, or you can reverse this order. You can write private multiple times. Even you can write private before the declaration of every single data member or member function. मतलब ये कि आप हर एक के साथ भी प्राइवेट और पब्लिक लिख के यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्राइवेट और डबल विड्थ और इसी तरह प्राइवेट डबल लेंथ, फिर उस केस में आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। So this is what you need to remember. If you do not specify any access specifier, then the default access level in class is private, whereas default access for structure is public. This is another difference between structure and class. Okay. Now, const keyword. Const keyword with member function is very helpful. Why do you want to use const keyword? So these are different examples of the functionality or behavior of rectangle class. जो इससे पहले आपने एग्जांपल देखी थी उसमें सिर्फ यहाँ तक थी जो डिक्लेरेशन लिखी गई थी फंक्शन की, width, get width, round brackets and then comma. इसी तरह लेंथ की भी यहाँ पे थी, इसी तरह get की भी यहाँ पे थी, यहाँ तक थी सिर्फ डेफिनेशन डिक्लेरेशन और इसमें const कीवर्ड नहीं लिखा था। अब इस const कीवर्ड को यहाँ पे लिखने का बेनिफिट जो है ना वो बड़ा easy to understand and very useful. So if we do not want this function get width to change the state of the object, then we can write this const keyword after the name of this function and brackets. If we write this const keyword here, it means that this function will not be able to change the state of the object और ये सिर्फ रीड कर सकेगा उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को। सिमिलरली इन लेंथ का फंक्शन जो है ये जिस ऑब्जेक्ट के साथ भी आप डॉट लगा के कॉल करेंगे ये उस ऑब्जेक्ट के जो एक एट्रीब्यूट होगा लेंथ का, ये जो भी आपने इसकी डेफिनेशन दी होगी वो वाला एट्रीब्यूट की वैल्यू जिसकी टाइप डबल होगी वो रिटर्न कर सकेगा, लेकिन चेंज कुछ भी नहीं कर सकेगा। If we try to change the state of the object in const member functions, in member functions that are using const in this format, in this way, then you will get a compile time error. You will not be able to compile your code. It is considered a syntax error. So ये आप नहीं कर सकते। अगर आप const keyword लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब आप इसको इस function के अंदर object की state को change नहीं कर सकते। Usually जितने getter functions होते हैं वो
स्टेट को चेंज नहीं करते और हम उसके साथ कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कॉन्स्ट कीवर्ड जो है ना वो सिर्फ गेटर फंक्शंस जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को गेट करने के लिए यूज किए जाते हैं उनके साथ लगाया जाता है। How do we define the behavior of a class, or in other words, how to define a member function of a class? Member function of a class is a simple C++ function, but syntax for writing is a bit different. So, as you can see, this set width is the name of the function, and in round brackets you can specify the arguments that this function receives whenever it's called, और उस argument की जो type है वो double है, right? और अब ये name जो function का है, इस function की return type integer है। दरमियान में ये जो portion है rectangle और उसके बाद ये दो दफ़ा जो colon दिया गया है, ये colon जो है, ये double colon जो है, इसको C++ या प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और इससे पहले लिखते हैं नेम ऑफ द क्लास। सो इफ वी कंबाइन दिस देन इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक रेक्टेंगल क्लास है, उस रेक्टेंगल क्लास में एक सेट विड्थ का फंक्शन है जो कि इनपुट लेता है एक डबल टाइप का आर्गुमेंट और आउटपुट देता है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली डिफाइन the member functions of a particular class or behavior of the class. This is one type of behavior of rectangle class. You can have many different types of behavior in rectangle class. और उसके बाद curly brackets, और इसमें आप जो भी functionality लिखना चाहते हैं उस object की state को modify करने के लिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. So in this particular case, W is this and width is the attribute of that object or state of that object. अच्छा, हर क्लास के कुछ getters और कुछ setter functions होते हैं। getter function की कुछ examples आपने पिछली slide पे भी देखी। So mutators को हम setter functions कहेंगे और accessors को हम getter functions कहेंगे। So mutators are those member functions that store a value in a private member variable or change its value in some way. So if you want to set the state of a variable to a new state, then you use mutators or setter functions, as opposed to accessors. Accessors are basically those functions that are used to retrieve the value of some private member variables, जैसे getter functions हैं, और getter functions के साथ हमने देखा कि const लगा देने से const भी लगाया जाता है ताकि वो object की state को modify ना कर सके। तो ये accessors and mutators are basically getters and setters.